Giant story ಇದು.
रात भर खूब रेन हुई है और अभी पूरा वीक जो है वो रेन ही है। और आज लास्ट डे ऑफ स्कूल है। नुआ बस अभी बस में गई है, बेटे दोनों नहीं गए, उनको नहीं जाना, उनका नहीं है कुछ। नुआ के लिए फ़न है तो वो गई है। इसके लिए देखिए हमने पूछा था कि इस ट्री पे क्या होगा, प्लांट्स आएंगे, लीव्स आएंगे कि नहीं, लेकिन इस पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे आ रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस पे ग्रो हो जाएगा। ज़रा ज़रा सा कहीं कहीं दिख रहा है। यहाँ से सैलिंग झाँक रहा है। स्पीडिंग फ्रॉम हियर। He's looking at me. Hi. 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 Hello. Hi. We're eating some good grass. Hi. Is there any more, dear? Where are your friends? And your brothers and sisters? Where are your siblings? There is two. Yeah, his sibling. That's his sister. That one's a he, that one's a... How you know? Because they look the same. They're looking at me. Look at us. They're going. This is cute. The other one, that one came from a bush. I think they're from the logs. ये लग गया। They went away. No, they went to the bushes. चला गया नुआ। I want to see if they can see it from this angle. No, I don't see it. Maybe, is there more? यहाँ पे बन रही है रोटी और साथ में ये बटर चिकन। इसको ओवन में अभी हमें फिर से डालना है। मैरिनेट किया हुआ अगर चिकन है फ्रीज़र में बोनलेस तो उससे बहुत ही ईज़िली बन जाता है। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो हमने सोचा उसको कुछ अच्छा सा लंच कराते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो बच्चे इतना कुछ खास खाते नहीं हैं। हमने कहा चलो बटर चिकन बनाते हैं और साथ में रोटी बन रही है, राइस बन गए हैं, तो अच्छा सा लंच रेडी होगा। रोटी पे लगेगा घी। इसको वापस से डालते हैं ओवन में। यहाँ पे बटर चिकन तैयार हो गया था, ओवन में 2 मिनट रह गया तो इस साइज से थोड़ा सा बंद हो गया। इस पर हमने ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसे फॉइल कवर करके रख देते हैं और थोड़ी देर में जब बच्चे खाने के लिए रेडी होंगे तब इन्हें हम सर्व करेंगे। यहाँ पे हमने एक पीस निकाल के रखा है, इसको चेक करते हैं कि गला है कि नहीं। वाह, बहुत अच्छे से गल गया है। इसको टेस्ट भी किया जा सकता है, पर अभी ये हॉट है। 350 पे हमारा ओवन रेडी है और यहाँ पे बन रहा है चॉकलेट चिप्स कुकी केक। साथ में हमने कुछ कुकी के लिए भी डो निकाल दिया, 5 से 6 कुकी भी बन जाएगी। तो इसको हम ओवन में डालेंगे और कुक टाइम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 25 मिनट हम स्टार्ट करते हैं। इसको डालते हैं ओवन में। कुकी को बेक होने में टाइम लगेगा। ओवन हमारा प्री हीटर है। केक को टाइम लगेगा, कुकी को कम टाइम लगेगा। तो कुकी को 10 से 12 मिनट में हम निकाल लेंगे। एलेक्सा 10 मिनट टाइमर। Happy birthday
Love the candles. The 15 is missed. Just the 1 and 0 are ruined.